Hello, welcome back, guys, to Exam Focus. First of all, thank you very much for 10,000 सब्सक्राइबर्स. आप सब मिलकर, अब हम सब मिलकर इनफैक्ट 10,000 के फैमिली हैं ये. और आपको पता ही है कि होल एंड सोल मैं अकेले इस चैनल को चलाता हूँ. तो थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग इट. एंड कुछ लोग जो रेगुलरली मेरा वीडियो देखते हैं, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू पीपल. एंड दिस वीडियो इज बेसिकली जनरल नॉलेज क्विज. एंड हर क्वेश्चन में मैं 20 सेकंड सिर्फ दूंगा, मैक्सिमम 25 सेकंड, जो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा. तो आपको अटेम्प्ट करने हैं. उम्मीद है आपके पास एक पेन और एक कागज या कॉपी कुछ भी जरूर होगा, ताकि आप अपना आंसर जो है वो मार्क करें और लास्ट में आंसर की से उसको मैच करके देखें. तो क्वेश्चंस आर ऑफ मॉडरेट लेवल. तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा. तो थोड़ा सा फास्ट रहेगा. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो जनरल नॉलेज का पार्ट है उसको थोड़ा सा फास्ट रखूँ, 20 सेकंड 25 सेकंड, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम बचाना है एग्जाम में, ताकि जब आप टेक्निकल पोर्शन अटेम्प्ट करें तो आपको थोड़ा सा ज्यादा समय मिले, या रीजनिंग या जो इंग्लिश का सेक्शन है उसमें कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में. तो चलते हैं वीडियो पर, आई मीन द नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, आर यू रेडी? सो हियर वी स्टार्ट. ओके,
ओके, आर यू रेडी फॉर द आंसर? और इस वीडियो का मैं कंप्लीट रिव्यू बनाऊंगा अगला वीडियो जो मैं पोस्ट करूंगा, और ये भी बता देता हूँ कि जो इंग्लिश का वीडियो आएगा वो इसके जस्ट बाद फॉलो करेगा। तो आइटम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और टेस्ट नंबर 3 जो है, जिसमें टेस्ट 2 का भी सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलते हैं आंसर की तरफ। ये है आंसर की, और उम्मीद है मैंने कोई गलती नहीं की हो। इफ आई हैव डन एनी मिस्टेक तो लेट मी नो, तो वी विल करेक्ट इट, इनफैक्ट आई विल करेक्ट इट। सो दिस इज द आंसर की, और जितने भी नंबर आए प्लीज शेयर कीजिएगा। दिस वाज अ बिट लेवल अबव दैट व्हाट आई यूज्ड टू पोस्ट इन ऑन रेगुलर बेसिस। थोड़ा सा ये बेटर लेवल का था क्वेश्चंस, तो उम्मीद है आप सब ने अच्छा स्कोर किया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, एंड यू विल गेट द सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इन द अपकमिंग वीडियो। तो मैं कल ही पोस्ट करूंगा वो वीडियो, और उसको अच्छे से विथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। So that is not a issue. Okay, thank you very much for watching. Keep watching Exam Focus, and once again thank you very much for all those 10,000 people. Thank you.